Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we will discuss our topic, which is transport of respiratory gases. Basically, the transport of respiratory gases is in the form of O2 and CO2. We have to transport these two gases, oxygen from the lungs toward the cell and carbon dioxide from the cell to the lung. तो हमने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट को जो है वो क्या से सेल से एल्वियोलाई के लेवल तक लेके आना है। ऑक्सीजन को ऑक्सीजन को एल्वियोलाई से सेल के लेवल तक जो है वो लेके जाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को सेल के लेवल से लंग्स में जो है वो लेके आना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है सेल्स का, जो कि कॉन्टिन्यूसली जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है सेल के अंदर, उसको हमने लंग्स के लेवल पे लेके आना है ताकि वहां से वो एक्सपेल आउट कर जाए। तो इसका जो ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म है वो कौन कौन से हैं उनको इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। First is the transport of oxygen. The transport of oxygen is as a simple physical solution, and second is in combination with the hemoglobin. So, as a simple solution, the oxygen is combined with the water of plasma, like it dissolves in water of plasma and then transported as a simple solution form, and the amount of oxygen which is transported in this way is 0.3 ml per 100 ml of plasma, about 3% of total oxygen in the blood. So this mechanism is basically this mechanism is very less amount of oxygen is transported through this mechanism, and the poor solubility of oxygen in water content of plasma. And in combination with the hemoglobin, which is the second mechanism through which oxygen is transported in the body, the hemoglobin is basically present in the red blood cells. So when oxygen combined with the hemoglobin, it forms oxyhemoglobin. So the oxygen is transported in the blood through oxyhemoglobin, and the maximum amount is 97% of oxygen is transported by this mechanism. So हमने ऑक्सीजन की दो मैकेनिज्म को देखा है। एक सिंपल सॉल्यूशन है कि वो वाटर के अंदर प्लाज्मा में जो वाटर है उसके अंदर डिजोल्व हो जाती है। तो जो इस तरह से ट्रांसपोर्ट है एज अ सिंपल सॉल्यूशन फॉर्म, इट इज ओनली 3%। एंड इन कॉम्बिनेशन विद द हीमोग्लोबिन जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन उस रेड ब्लड सेल्स की हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और इस तरह से जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है दैट इज 97%। 97%। Then oxygenation of hemoglobin is basically a physical process. It is oxygenation. Oxygenation means addition. It is not an oxidation process. ऑक्सीजनेशन में जस्ट क्या है कि सिंपल ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के अंदर ऐड हो गई है। इट नॉट ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ओके, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस जो है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो मैकेनिज्म इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होता। अब क्या होता है कि बेसिकली जो इस ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के अंदर मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रहा है, बेसिकली ऑक्सीजन कंबाइन करती है विद आयरन के साथ इन द हीम पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। जो हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन है वो कंटेन कर रहा है आयरन के ऊपर। इसके अंदर 4 एटम्स ऑफ जो है वो आयरन होते हैं। तो जो आयरन ऑफ हीमोग्लोबिन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फेरस फॉर्म। ठीक, so each iron atom combined with one molecule of oxygen. One molecule of hemoglobin will contain 4 atoms of iron. So one molecule of hemoglobin will contain the 4 molecule of oxygen, because with the one molecule of iron, one oxygen molecule will combine. So this is why the combination of oxygen with hemoglobin is called the oxidation, not oxidation process. कि सिंपल क्या है, एड अप हो रहा है। सिंपल क्या है, उसकी एडिशन हो रही है।
व्हाट इज बेसिकली द एडवांटेज ऑफ ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हमने बात की है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की। ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो एज अ डिजॉल्व फॉर्म में होता है या एज विद कॉम्बिनेशन विद द हीमोग्लोबिन होता है, विच इज नाउन एज द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब इस ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस है उसका क्या बेनिफिट है? Oxygen can be readily released from the hemoglobin when it is needed. Hemoglobin accepts oxygen readily whenever the partial pressure of oxygen in the blood is more, and the hemoglobin gives out whenever the partial pressure of oxygen in the blood is less. तो बेसिकली क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर इंक्रीज करता है, ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के अंदर एड अप हो जाती है, जो हीमोग्लोबिन है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब जैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ब्लड के अंदर कम होता है, तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करेगी, ऑक्सीजन को रिलीज करना शुरू कर देगी, ठीक है, गिव आउट करना शुरू कर देगी। तो ये जो मैकेनिज्म है उसके एक्सेप्टेंस का और उसके रिलीज होने का वो बेसिकली पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और ऑक्सीजन कैन बी रिलीज फ्रॉम द हीमोग्लोबिन व्हेन इट इज नीडेड। तो ये जो ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस है, जो एडअप होने का प्रोसेस है, वो बेसिकली ऑक्सीजन के इजीली रिलीज होने में, पार्शियल प्रेशर के डिक्रीज करने से और पार्शियल प्रेशर के इंक्रीज करने से एडअप होने के प्रोसेस को जो है वो क्या कर रहा है, में मेन रोल जो है वो प्ले कर रहा है। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, अगर हम देखते हैं कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो 1.34 ml जो है वो ऑक्सीजन को कैरी कर सकते हैं। तो अगर हम टोटल ब्लड की देखते हैं, पहले हमने देखी 1 ग्राम, अगर हम टोटल ब्लड की देखते हैं कि टोटल ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कितनी है, तो जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट इन द ब्लड है वो 15 ग्राम है। ओके, हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करती है, 1.3 ml पर ग्राम जो है वो 1.3 ml जो है वो ऑक्सीजन को कैरी कर सकती है। तो जो टोटल हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के अंदर है दैट इज 15 ग्राम, और 1 ग्राम किसको कैरी कर सकती है, 1.34 ml को ऑक्सीजन। तो जो टोटल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ टोटल ब्लड होगी दैट विल बी 20.1 ml। सो द ब्लड विद 50 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, ऐसा ब्लड जिसके अंदर 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगी, उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है दैट विल बी 20.1 ml %, ठीक। अब but the blood with 50 gram of hemoglobin carries only 19 ml of oxygen. The 19 ml of oxygen is carried by 100 ml of blood. So if the blood is present in our body that is 100 ml that contains 15 gram of hemoglobin, and then this 15 gram of hemoglobin can carry 20.1 ml of oxygen, but the 15 gram of hemoglobin will contain only 19 ml of oxygen. So the saturation of hemoglobin will be 19 ml and it will be less than 1%. जो 1% less है, 1% लेस है, उसके डिफरेंट जो है वो रीजन हो सकता है कि उसमें हीमोग्लोबिन, बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का कंटेंट 15 एक्यूरेट ना हो, that will be less than. So the oxygen carrying capacity of blood is only 19 ml because of the hemoglobin is not fully saturated with oxygen and it is about 95% saturation. So अगर हमने इसके अंदर देखा कि जो ब्लड है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, हमने देखा कि ब्लड के अंदर हमारे पास हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की मिकदार 15 ग्राम है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी कर सकती है। तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन will contain the 20.1 ml of oxygen, but the oxygen carrying capacity of the whole hemoglobin, which is 15 gram of blood, is only 19 ml, that is not 20.1 ml. That may be due to the hemoglobin is not fully saturated.
The reason behind this may be the hemoglobin is not fully saturated. So 1% जो है वो oxygen carrying capacity of the 15 gram of hemoglobin will be less. The saturation of hemoglobin with oxygen. The saturation is a state or a condition when the hemoglobin is unable to hold or carry any more oxygen. जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के अंदर फर्दर ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी, उसको होल्ड करने की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी, तो उस स्टेट में, उस कंडीशन में जो है वो हम कहेंगे कि हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन जो है वो हो चुकी है. So the saturation of the hemoglobin with oxygen also depend upon the partial pressure of oxygen, and it is explained by the oxygen hemoglobin dissociation curve. सो ऑक्सीजन की सेचुरेशन हीमोग्लोबिन के साथ हम किस तरह से बता सकते हैं, इसको बताने के लिए हम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को देखते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ सेचुरेशन को पार्शियल प्रेशर के थ्रू जो है वो बताया गया है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अगर इंक्रीज करेगा तो जो सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है दैट विल इंक्रीज. अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल डिक्रीज, then the saturation of oxygen, the saturation of hemoglobin will decrease. So the oxygen hemoglobin dissociation curve is a curve that shows the relationship between the partial pressure of oxygen and the percentage saturation of hemoglobin with oxygen. तो ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट है उसमें हमने ऑक्सी हीमोग्लोबिन को डिस्कस किया है कि जो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट है उस वो किस तरह से होती है, और उसमें जो मेन रोल है दैट इज oxygen hemoglobin dissociation curve, which represent the saturation of hemoglobin with the partial pressure of oxygen. सो इसके अंदर जो वर्टिकल एक्सिस है उसके अगेंस्ट हम जो है वो हीमोग्लोबिन को लेंगे और सेचुरेशन को लेंगे, और जो उसका हॉरिजेंटल एक्सिस है उसके अगेंस्ट हम जो है वो क्या लेंगे कि कितनी जो है वो ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रही है ऑन द हॉरिजेंटल एक्सिस, प्रिविलेज ऑफ ऑक्सीजन टेंशन, या हम कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को जो है वो हम हॉरिजेंटल एक्सिस पे जो है वो ड्रॉ करते हैं. अब ये जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है जो हीमोग्लोबिन की सेचुरेशन को पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के साथ जो है वो शो कर रही है, ये बेसिकली क्या होती है, ये एक सिग्मॉइड शेप जो है वो स्ट्रक्चर होती है, दैट इज एस शेप स्ट्रक्चर. The lower part of the curve will show the dissociation of oxygen from hemoglobin. ठीक, और जो अपर पार्ट है that will show the uptake of oxygen from the hemoglobin. हम इसमें भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे जो इसका लोअर पार्ट है वो क्या करवा रहा है, इंडिकेट कर रहा है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन को. ठीक, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन. और जो इसका अपर पार्ट है वो किस चीज को शो कर रहा है, अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय द हीमोग्लोबिन डिपेंडिंग अपॉन द पार्शियल प्रेशर. So normally the blood with the hemoglobin is saturated only 95%. So the saturation is basically depend कर रही है on the partial pressure of oxygen. हम इसके अंदर देख सकते हैं, ठीक है, इस ग्राफ में हम जो है वो डिटेल्ड देखते हैं स्ट्रक्चर को. So on vertical axis we said that the oxygen hemoglobin dissociation curve basically show the relationship between the saturation of the hemoglobin and the partial pressure of oxygen. Okay, so on the horizontal axis we take the partial pressure of oxygen, and on the vertical axis we take the saturation of the hemoglobin. So in this diagram we can see here, as the partial pressure of oxygen will increase, the saturation of hemoglobin will also increase. So there is the at the P50 that is the partial pressure of oxygen, which is 15. So the partial pressure, no, the partial pressure is not discussed here, is the saturation of the hemoglobin is 50%, which will be at the 25% partial pressure of oxygen. So P50 is basically at which the 50% of the hemoglobin is saturated. Okay, here
the structure is show if the partial pressure is decreased, then the graph, which is X-shaped sigmoid structure, will move toward the right, and if the partial pressure is increased, then this structure will shift toward the left. In uh, इस पार्शियल प्रेशर के अलावा भी डिफरेंट जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि इस ग्राफ की राइट और लेफ्ट साइड पे जो मूवमेंट है उसको शो कर रहे होते हैं, उनको हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे. सो द P50 is the partial pressure of oxygen at which the hemoglobin is 50% saturated. When the partial pressure of oxygen is 25 to 27 mmHg, the hemoglobin is saturated about 50%. At 40 mmHg of partial pressure of oxygen, the saturation is 75%, and at the 95% when the partial pressure of oxygen is 100 mmHg. Okay? And 100 mmHg, the partial pressure of 95% of saturation of oxygen will take place. So what are the different factors which affect the oxygen hemoglobin dissociation curve to move toward the right and to move toward the left? So shift toward the left indicate the acceptance association of oxygen. So जैसे कि अगर हम देखते हैं कि अगर ये लेफ्ट की तरफ जो है वो मूव कर रहा है तो डेट मीन कि सेचुरेशन हो रही है. ठीक है, अगर ये P50 की जो लाइन है इससे ग्राफ लेफ्ट की तरफ मूव करता है, डेट मीन देयर इज increase in the saturation of hemoglobin, there is increase in the acceptance of the hemoglobin. अगर यही ग्राफ जो है वो राइट की तरफ मूव कर रहा है, that will show the partial pressure is reduced. When the partial pressure is reduced, the hemoglobin content will less saturated. So the shift toward the right indicate the dissociation of oxygen, the release of oxygen from the hemoglobin, that is the low oxygen affinity. And when there is high oxygen affinity, then the graph will move toward the left, and when there is low oxygen affinity, the graph will move toward the right. That will show the dissociation of oxygen from the hemoglobin, and toward the left will show the acceptance of oxygen toward the hemoglobin. So there are other different factors which also affect the graph sigmoid shaped structure movement toward the left and the right, and these factors वो factors कौन से हैं जो कि इस sigmoid shaped structure को right और left जो है वो करने पे जो है वो affect कर रहे हैं. जैसे कि हम ऑलरेडी पिछले डायग्राम के अंदर हमने देखा था कि ये ग्राफ जो है वो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे जो है वो मूव कर रहा था. अगर वो राइट साइड की तरफ मूव करता है, डेट मीन कि यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई है. जब डेफिशिएंसी हो गई है तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज करना शुरू कर देगी, तो डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी, तो सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी. अगर यही ग्राफ जो है वो राइट लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है, that means there will be the increase in the partial pressure of oxygen, there is increase in the saturation of the hemoglobin. Okay, तो इसके अलावा भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि इसको राइट और लेफ्ट की तरफ जो है वो मूव करने में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे कि डिक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. So how the oxygen will shift toward the right side, the blue line will show the right side. So as if the partial pressure will be decreased, if it will be 50, it will be 40, 45. So what will happen? The hemoglobin will also release oxygen, and the saturation of the hemoglobin will decrease. So we can say here at the 50, the partial pressure is this one, and if we see at the 25 the partial pressure, then the hemoglobin will have the less saturation, so the graph will move toward the right. So the decrease in the partial pressure of oxygen will cause the graph as sigmoid shape structure to move toward the right side. Increase in the partial pressure of the carbon dioxide. So if the carbon dioxide pressure will increase, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो एफिनिटी है वो ऑक्सीजन के प्रेशर से ज्यादा है, तो वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को
सेल के अंदर से हीमोग्लोबिन से जो वो निकालेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी हीमोग्लोबिन के साथ जो एफिनिटी है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग देन ऑक्सीजन। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर गया है तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को क्या करेगा, वहां से निकालना शुरू कर देगा। कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा हो जाएगी और ऑक्सीजन की लूज बाइंडिंग हो जाएगी। तो इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड, increase in the carbon dioxide, increase in the carbon dioxide partial pressure will cause the less saturation of hemoglobin with the oxygen and formation of oxyhemoglobin. Third one is increase in the hydrogen ion concentration and decrease in the pH. Okay. Uh, when in the cell there is increased in the concentration of the hydrogen ion, increase in the concentration of hydrogen ion will cause decrease in the pH of the cell, and this decrease in pH of the cell will cause the hemoglobin to release oxygen. When this oxygen is released, when this oxygen is released in the cell, it will cause the hemoglobin less saturation. Increased in the body temperature and excess of 2,3 disphosphate, this diphosphoglycerate DPG in the RBC. This amount excess will also cause dissociation of oxygen and less saturation of hemoglobin. So these are different factors which cause the movement of S-sigmoid shaped structure graph toward the right side, that is less and decrease in the partial pressure of oxygen, increase in the partial pressure of carbon dioxide, increase in the hydrogen ion concentration, increase in the body temperature, and excess of 2,3-diphosphoglycerate DPG in the RBC. So there are different factors which cause the oxygen dissociation curve to move toward the left side. What are basically these two factors? In the fetal blood, because the fetal hemoglobin has got more affinity for oxygen than the adult hemoglobin. So in the fetal blood, the efficiency of hemoglobin with oxygen combination, the affinity is more. So the graph, which is S-sigmoid shape, from the P50 actual जो है वो ideal structure, it will move toward the right. It will move toward the left side. And decrease in the hydrogen ion concentration and increase in the pH toward the alkaline nature will also cause the graph of a sigmoid shape to move toward the left side, to move toward that side in which the saturation of hemoglobin will increase. So what is basically the Bohr effect? Bohr effect is the effect by which the presence of carbon dioxide decreases the affinity of hemoglobin for oxygen. बेसिकली हम ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएशन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन को देखा, फिर हमने देखा कि किस तरह से पार्शियल प्रेशर जो है वो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ सेचुरेशन को इफेक्ट कर रहा है। और ये बोहर इफेक्ट क्या है बोहर इफेक्ट? कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस जो है वो क्या करती है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी को डिक्रीज कर जाती है। ठीक, जैसा कि हमने सेकंड जो है उसके स्टेप में भी पढ़ा था कि जब ग्राफ लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा था तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमारे पास ज्यादा थी। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई थी तो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज कर गया था, तो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ जो एफिनिटी थी, जो एसोसिएशन थी, वो लूज हो गई थी, जिसकी वजह से सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो डिक्रीज कर गई थी। और P50 के एस सिग्मॉइड शेप ग्राफ जो है वो लेफ्ट राइट की तरफ जो है वो मूव कर गया था, नॉट लेफ्ट, राइट की तरफ मूव कर गया था। दैट मीन्स द सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन विल डिक्रीज। अब
In the tissue, due to the continuous metabolical activities, the partial pressure of carbon dioxide is very high and the partial pressure of oxygen is very low. अब ये जो बोहर इफेक्ट है, बेसिकली ये जो है वो टिश्यू के लेवल के ऊपर मेन रोल प्ले कर रहा है, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो एसोसिएशन जो है वो बढ़ जाती है। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की हीमोग्लोबिन सेल टिश्यू के लेवल के ऊपर जाके, सेल के लेवल के ऊपर जाके कार्बन डाइऑक्साइड का जहाँ पे प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है, जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यू लेवल के ऊपर ज्यादा हो गया है, तो ये पार्शियल प्रेशर जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ अपनी एसोसिएशन को स्ट्रांगली जो है वो शो करेगा। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो ज्यादा हो जाएगी, तो लूज होना शुरू हो जाएगी ऑक्सीजन। तो ये जो इफेक्ट है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस से हीमोग्लोबिन की और जो सेचुरेशन है ऑक्सीजन के साथ वो डिक्रीज कर रही है, this effect is basically known as the Bohr effect, and this pressure gradient of carbon dioxide, the blood carbon dioxide will enter into the blood at the tissue level, and oxygen is released from the blood into the tissue. Okay, and the presence of carbon dioxide decreases the affinity of the hemoglobin for oxygen. It enhances further release of oxygen to the tissue, and oxygen dissociation curve is shifted toward the right. So the presence of high concentration of the carbon dioxide will shift the graph toward the right side, as I discussed, as I explained early already in the previous slide, in this slide also. सो हमने क्या देखा कि बोहर इफेक्ट क्या है। बोहर इफेक्ट वो इफेक्ट है कि जिसकी वजह से कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से जो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ एफिनिटी है, जो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएशन है, वो डिक्रीज कर जाती है। और ये बोहर इफेक्ट जो है वो टिश्यू के लेवल के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। जब टिश्यू के लेवल के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, तो जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो अटैचमेंट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज पार्शियल प्रेशर के साथ जो है वो मूव करेगी टुवर्ड द हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ एफिनिटी को लूज करा देगी। जैसे ही ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ एफिनिटी लूज हो जाएगी, तो ऑक्सीजन जो है वो मूव करेगी फ्रॉम हीमोग्लोबिन टुवर्ड द टिश्यू. So the transport of oxygen from the blood toward the tissue and the carbon dioxide from the tissue toward the hemoglobin is discussed, is can be explained through the Bohr effect. So in the previous slide we discussed about the how the oxygen is transported in a dissolved form in the oxyhemoglobin form. Okay. Now we will discuss how the carbon dioxide is transported. How the carbon dioxide is transported from the tissue toward the alveoli through the blood. So the carbon dioxide is transported as a dissolved form, which is 77%, as carbonic acid, that is negligible, as bicarbonate, that is 63%, and as amino compound, that is 30%. So 4 मैकेनिज्म हैं कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट के टिश्यू से एल्वुलाई के लेवल तक। कौन कौन से हैं? प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म, दैट इज 7%, कार्बोनिक एसिड की फॉर्म, बाइकार्बोनेट की फॉर्म और कार्बो अमाइनो कंपाउंड की फॉर्म। सो एज अ डिजॉल्व फॉर्म, सो प्लाज्मा के अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर जो डिजॉल्व फॉर्म के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रही है, दैट इज ओनली 3 ml per 100 ml. Okay, and it is about 7% of the total carbon dioxide in the blood. As carbonic acid, the part of dissolved carbon dioxide in the plasma combined with the water to form the carbonic acid, and transport of carbon dioxide in this form is negligible. के पहला जो है वो डिजॉल्व फॉर्म है, that is 3 ml per 100 ml of plasma. So through dissolved form 7% of the total, मीन के 100% में से 7% जो है वो डिजॉल्व फॉर्म के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रही है। कार्बोनिक एसिड की फॉर्म के अंदर बहुत ही निग्लिजिबल फॉर्म में हो रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबाइन करती है वाटर के साथ, बनाती है कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड जो है वो ब्लड के अंदर जो है मूव करता है। लेकिन ये कार्बोनिक एसिड बेसिकली अनस्टेबल होता है, इसको हम आगे देखेंगे कि किस तरह से होता है। थर्ड वन इज द कार्बन बाइकार्बोनेट। अब जो 63% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट था वो कार्बोनिक बाइकार्बोनेट की फॉर्म में हो रहा होता है। बेसिकली क्या होता है कि आरबीसी के अंदर जो कार्बोनिक एसिड होता है, आरबीसी के सेल्स के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लाज्मा से आ रहा होता है वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर कंबाइन करता है वाटर के साथ, कार्बोनिक एसिड बनाता है। अब ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो कार्बोनिक एसिड है
आरबीसी के अंदर ये कार्बोनिक एसिड जो है वो बाइकार्बोनेट में और हाइड्रोजन आयन में जो है वो क्या हो जाता है, डिसोसिएट कर जाता है। अब ये जो बाइकार्बोनेट में अब जो ये हाइड्रोजन है जो कि रिलीज हो रही है, ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलके जो है वो क्या बना देगी, HHP बना देगी, ठीक है। दैट विल कॉज द इंक्रीज इन द पीएच ऑफ द आरबीसी। और जो बाइकार्बोनेट है ये क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के अंदर, ब्लड के प्लाज्मा में जो है वो आ जाएगा। अब ब्लड के प्लाज्मा में सोडियम जो है वो प्रेजेंट होती है, ये सोडियम जो है वो बाइकार्बोनेट के साथ मिलके क्या कर देगी, सोडियम बाइकार्बोनेट बना देगी। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो गया, कार्बन कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यू से कहाँ पे आ गया, ब्लड के अंदर आ गया, और ब्लड के अंदर जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट है। So the high concentration of the bicarbonate ion diffuse through the cell membrane into the plasma. अब जब यही बाइकार्बोनेट आयन, यही सोडियम बाइकार्बोनेट आयन जो हैं ये रीच करते हैं एल्वेलाई के लेवल के ऊपर, जो ब्लड होता है उसमें, तो ये जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं ये क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट आयंस ये बेसिकली डिसोसिएट कर जाते हैं इनटू द सोडियम एंड ओके। इसके अंदर सेम वही मैकेनिज्म जो है वो डिस्कस किया हुआ है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके, इस स्लाइड में अगेन जो है वो बाइकार्बोनेट आयंस का वही बताया हुआ है कि किस तरह से टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सिक्रीट हो रही है। देन कार्बन डाइऑक्साइड का जैसे प्रेशर टिश्यू के लेवल के ऊपर इंक्रीज किया है, वो प्लाज्मा के अंदर आया है, प्लाज्मा से रेड ब्लड सेल्स के अंदर आया है, रेड ब्लड सेल के अंदर कार्बन ने वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना दिया है, कार्बोनिक एसिड ने जो है वो फर्दर डिसोसिएट करके हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट बनाया है। ये बाइकार्बोनेट जो है वो प्लाज्मा में आया है क्लोराइड आयंस की जो है वो रिवर्स जो है वो ट्रांसपोर्ट से, और ये जो हाइड्रोजन आयन बना था ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर जो है वो कंबाइन कर जाता है। अब रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट जो कि किस लेवल के ऊपर होगी, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट अब बेसिकली जो है वो लंग के लेवल के ऊपर होगी, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो रीच करेगा, या sodium bicarbonate वाला blood will reach at the level of the lung, then the reverse shift of the RBC will take place, and the bicarbonate is converted back into the carbon dioxide, which is expelled out. So in the reverse shift, what will happen? In the reverse shift, again when the blood reach at the alveoli, sodium bicarbonate in the plasma dissociate into the sodium and the bicarbonate ion. The bicarbonate ion then enter into the RBC. It makes chloride ion to move out of the RBC into the plasma, where it combines with the sodium to form the sodium chloride. So the bicarbonate ion inside the RBCs are combined with the hydrogen ion to form the carbonic acid, which dissociates into the water and carbon dioxide, and the carbon dioxide is expelled out. So this is basically how the transport of carbon dioxide will take place at the tissue level, and from the blood, from the tissue into the blood, and then how this from the blood into the alveoli. So in this we can see from the cell CO2 is secreted in the RBC, CO2 combined with the water to form the carbonic acid. This carbonic acid is dissociated into the hydrogen ion and the bicarbonate ion. This bicarbonate ion then come into the plasma, and it is transported into the lung. When at the level of the lung, the blood will reach. The blood will reach. The RBC will stay here for 7.75 seconds. So when RBC will be here at the level of the alveoli in the blood, these bicarbonate ions then again dissociate into the sodium and the bicarbonate. This bicarbonate then enter into the RBC and combine with the hydrogen ion to form the bicarbonate ion H2CO3. This H2CO3 then dissociate into the water and carbon dioxide, and this carbon dioxide then expelled out into the lung. So the fourth form is carb-amino compound. What is basically the carb-amino compound? The carb-amino compound is basically when the carbon combined with the hemoglobin, it is carb-amino hemoglobin, and when it is combined with the plasma protein, that is called the carb-amino protein. So the carb-amino hemoglobin and carb-amino proteins are together called the carb-amino
carb amino compound. So a loose bond is formed between the carbon dioxide is easily released into the alveoli when the partial pressure of the carbon dioxide is low and the combination of the carbon dioxide with the protein and the hemoglobin is reversible. मीन के कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और यही कार्बन डाइऑक्साइड जब जो है वो प्रोटीन के साथ मिलती है तो कार्बामाइनो प्रोटीन बनाती है। अब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या कार्ब हीमोग्लोबिन या कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन और कार्ब हीमोग्लोबिन इज बेसिकली फॉर्म द कार्बामाइनो कंपाउंड। तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये कार्बोमाइनो कंपाउंड्स हैं, ये बेसिकली जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंड करे होते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि टिश्यू के लेवल के ऊपर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की अपने की हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्बिनेशन में जो है वो बढ़ जाती है। और अगर हम यही जो है वो लंग के लेवल के ऊपर देखते हैं तो लंग के लेवल के ऊपर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो बेसिकली क्या होती है, कम होती है, ऑक्सीजन की जो है वो पार्शियल प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन उसका जो प्रेशर है वो लेस कर गया है तो जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाएगी इनटू द ब्लड। So there is the carbon dioxide dissociation curve. Carbon dioxide dissociation curve is basically the curve that demonstrates the relationship between the partial pressure of carbon dioxide and the quantity of carbon dioxide that combine with the blood. So the amount of carbon dioxide combining with the blood depend upon the partial pressure of carbon. मैंने वही आपको पहले ऑलरेडी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो डिसोसिएट करती है या उसकी जो एसोसिएशन है उसको हमने इसमें देखा है कि किस तरह से होती है, वो किस तरह से पार्शियल प्रेशर के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही होती है। अब normal carbon dioxide dissociation curve basically showed that the carbon dioxide content in the blood is basically 48 ml when the partial pressure of carbon dioxide is 40 mmHg. That means at 40 mmHg partial pressure of carbon dioxide, the normal dissociation curve of carbon dioxide content is 48 mm. And when the pressure will increase toward the 48 mmHg of carbon dioxide, then the blood will contain 52 ml of carbon dioxide. And at 100 mmHg partial pressure of carbon dioxide, the 70% ml of carbon dioxide will be present in the blood. So carbon dioxide dissociation curve is basically the relationship between the partial pressure of the carbon dioxide and the quantity of carbon dioxide that combine with the blood. So in this diagram we can see here there is 20%, there is 25% जो है वो dissociation. When there is 95%, then there is the 85% जो है वो oxygen. Here we will discuss about the Haldane effect. What is basically the Haldane effect? Haldane effect is basically the effect by which the combination of oxygen with the hemoglobin displaces the carbon dioxide from the hemoglobin. जिस तरह से हमने बोहर इफेक्ट को देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ जो एफिशिएंसी थी, जो एसोसिएशन थी, वो डिक्रीज कर गई थी। इसी तरह से हेल्डन इफेक्ट में क्या होता है कि combination of oxygen with the hemoglobin displaces the carbon dioxide from the hemoglobin, but it will occur when the partial pressure of the oxygen will increase. So the excess of oxygen content in the blood will cause the shift of the carbon dioxide dissociation curve toward the right. So we can see here, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इंक्रीज करेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के इंक्रीज करने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कॉम्बिनेशन विद ब्लड के साथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और ये जो शिफ्ट है ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व की वो कहाँ पे हो जाएगी, राइट साइड पे हो जाएगी। तो राइट साइड पे होने का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो क्या हो गया, कम हो गया। अगर यही शिफ्ट लेफ्ट की तरफ होगी तो डेट मीन कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉम्बिनेशन है वो ब्लड के साथ क्या कर गया है, इंक्रीज कर गया है। So what are basically the causes of the Haldane effect? Due to the combination of oxygen with the hemoglobin, hemoglobin become the strongly acidic. It causes the displacement of the carbon dioxide from the hemoglobin in two ways. The highly acidic hemoglobin has a low tendency to combine with the carbon dioxide, though the carbon dioxide is displaced from the blood. So जब हमारे पास हीमोग्लोबिन के अंदर कंसंट्रेशन जो है वो
हाईली एसिडिक हीमोग्लोबिन है, हाईली एसिडिक हीमोग्लोबिन कब होगी, हाईली एसिडिक हीमोग्लोबिन उस टाइम पे होगी ना जब हमारे पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होगी। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो हाईली एसिडिक हीमोग्लोबिन है, देन इट हैज अ लो टेंडेंसी टू कंबाइन विद द कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज दैट शो दैट देयर इज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, so the carbon dioxide is displaced away from the blood and because so कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि अगर हम टिश्यू के लेवल के ऊपर बात करते हैं तो जैसे कि अगर हम देखते हैं ना कि हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के अंदर क्या था, जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही थी तो कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही थी, जैसे ही कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही थी तो बाई कार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन जो है वो बन रहा था। जो हाइड्रोजन आयन है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर जो है वो क्या बना रहा था, हाइड्रोजन आयन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलके जो है वो उसके इन्वायरमेंट को जो है वो स्टिक कर रहा था, और जो बाइकार्बोनेट था वो प्लाज्मा के अंदर रिलीज होकर सोडियम बाइकार्बोनेट की उसने फॉर्म बना ली। सो दैट विल बेसिकली एट द लेवल ऑफ लंग एंड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ जो है वो ऑक्सीजन। But when there is the highly acidic hemoglobin, that means the oxygen concentration is more, then the carbon dioxide is displaced away from the blood. तो जो हाई कंसंट्रेशन है वो क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्प्लेस करा रही है ब्लड से, एंड बिकॉज ऑफ द एसिडिटी हाइड्रोजन आयंस आर रिलीज्ड इन द एक्सेस एंड हाइड्रोजन आयन बाइंड विद द बाइकार्बोनेट आयन टू फॉर्म द कार्बोनिक एसिड एंड द कार्बोनिक एसिड इन टर्न डिसोसिएट इनटू द वाटर एंड द कार्बोनिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड फ्रॉम द ब्लड। तो हाईली एसिडिक ने क्या किया है, देन अगेन जो है वो रिवर्स प्रोसेस करके कार्बन डाइऑक्साइड को एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई को रिलीज करा दिया। So, what are basically the significance of the Haldane effect? Haldane effect है because the release of the carbon dioxide from the blood into the alveoli of the lung and the uptake of oxygen away from the blood. So, ये जो हेल्डन इफेक्ट था इसने क्या किया था, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन का विद हीमोग्लोबिन के साथ जितना ज़्यादा कॉम्बिनेशन इंक्रीज करेगा उतना ज़्यादा डिस्प्लेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन कंटेन इन द ब्लड कॉज द शिफ्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड अवे टुवर्ड द डिसोसिएशन, कार्बन डाइऑक्साइड अवे डिसोसिएशन का टुवर्ड द right side. Hopefully you will understand about this topic. Okay जी, Allah Hafiz.